Assalamu alaikum and welcome back. Continuing the lecture that is effect of change on equilibrium position due to change in temperature. लास्टली मैंने आपको बताया था कि किस तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो इवॉल्व हीट है अगर उसके टेम्परेचर को हम सिस्टम के टेम्परेचर को हम ड्रॉप डाउन कर दें तो हम इसको किस तरह फेवर करते हैं. सिमिलरली मैंने बताया था कि किस तरह एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर को रेज करने की कोशिश करें, एक्चुअली वी फेवर द केमिकल रिएक्शन. नाउ लेट्स कंटिन्यू दैट एंड लेट मी टेल यू समथिंग दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज होता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. इसी चीज़ को हम एक्चुअली स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के सी की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ के सी, हाउ द वैल्यू ऑफ के सी, कि किस तरह के सी की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. सो लेट्स see an example for this purpose. We understand that temperature change can disturb the equilibrium position. Now we need to just exemplify this. तो किस तरह टेम्परेचर चेंज जो है वो सिस्टम की इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज कर सकता है. राइट, जी जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल. It is a reaction between carbon monoxide and water, giving off carbon dioxide and hydrogen gas, and you can see that this reaction is actually an exothermic process because we can see the sign of minus over here. So what we need to know is that if this is an exothermic reaction, अगर ये एक exothermic reaction है तो evolved heat, system is evolving heat, system is removing the heat because it has got some extra heat. तो अगर हम इस chemical reaction जिस जो कि एक्चुअली एक्सोथर्मिक नेचर का है, अगर इस केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को हम कम करें, दैट इज कूलिंग डाउन the system, so what we actually do favor this chemical reaction. Okay, what will happen अगर इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच चुका हो, अगर हम इसमें हीट को निकालें, we take out the heat, we pull out the heat by dropping down the temperature and keep the system at this now new lower temperature. अगर हम सिस्टम में से हीट को बाहर रिमूव करें, दैट इज हम इस सिस्टम को assuming that ये केमिकल रिएक्शन एक ऐसे सिलेंडर में हो रहा है, एक ऐसे बीकर में हो रहा है, अगर हम सिस्टम को कूल डाउन करने की कोशिश, टेम्परेचर को टॉप डाउन करें बाय कूलिंग डाउन द सिस्टम, तो व्हाट वी एक्चुअली डू, वी रिमूव द हीट फ्रॉम द सिस्टम. और अगर हम इस टेम्परेचर को कम करें और सिस्टम को इस नए टेम्परेचर पर रिटेन रखने की कोशिश करें, कीप द सिस्टम एट दिस न्यू लोअर टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन, द सिस्टम विल रीएडजस्ट इटसेल्फ. द सिस्टम विल रीएडजस्ट इटसेल्फ सो एज टू कंपनसेट द लॉस ऑफ हीट. सिस्टम अपने में से लॉस होने वाली हीट को कंपनसेट करने के लिए, सिस्टम में से हीट कैसे लॉस हो रही है, बिकॉज वी आर कूलिंग डाउन द सिस्टम. एक सिस्टम जो कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जिसमें हो रहा है, हम उसके टेम्परेचर को लो डाउन कर रहे हैं, कूलिंग डाउन कर रहे हैं. जब हम ऐसा करेंगे, एक्चुअली वी आर अप्लाइंग स्ट्रेस टू द सिस्टम. सिस्टम अपने इस ऊपर अप्लाई होने वाली न्यू स्ट्रेस को नलीफाई करने के लिए क्या करेगा, इट विल रीएडजस्ट इटसेल्फ सो एज टू कंपनसेट द लॉस ऑफ हीट एनर्जी. जो हीट एनर्जी हमने कूल डाउन करके उसकी सिस्टम में से निकाल दी है, रिमूव कर दी है, सिस्टम उसको कंपनसेट करने के लिए अपने आप को रीएडजस्ट करेगा. अब सिस्टम अपने आप को रीएडजस्ट किस तरह करेगा, सिस्टम मज़ीद कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवाएगा. सिस्टम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मज़ीद रिएक्ट करवाएगा और मज़ीद प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा. एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. रिमेंबर दैट कि इस फॉरवर्ड रिएक्शन के नतीजे में ही हीट इवॉल्व हो रही है. रिमेंबर दैट इस फॉरवर्ड रिएक्शन के नतीजे में ही हीट इवॉल्व हो रही है. तो अगर हम सिस्टम के टेम्परेचर को कूल डाउन करने की कोशिश करें,
सिस्टम जो कि एक्सोथर्मिक नेचर रखता है, अगर हम उसके टेम्परेचर को कम करें हैं बाय कूलिंग डाउन द सिस्टम, एक्चुअली वी आर रिमूविंग द हीट फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम अप्लाई होने वाली इस स्ट्रेस को नलिफाई करने के लिए, दैट इज़ कंपनसेशन ऑफ हीट के लिए, मज़ीद केमिकल रिएक्शन करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर हीट विच वी हैव ऑलरेडी टेकन आउट ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम अपने में से निकल जाने वाली, अपने में से रिमूव हो जाने वाली हीट को कंपनसेट करने के लिए मज़ीद कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर को आपस में रिएक्ट करवाएगा, एंड जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड मोर हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। ऑलराइट, ओके, अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखें, एक रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक नेचर रखता है, दैट मीन्स इसमें से हीट इवॉल्व होती है। अगर इस रिएक्शन मिक्सचर को, टेम्परेचर को हम कम करें बाय कूलिंग डाउन द सिस्टम, क्या होगा? दिस इज द स्ट्रेस, ये वो स्ट्रेस है जो हम सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं। एंड यू नो दैट अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल, सिस्टम अपनाए होने वाली स्ट्रेस को नलिफाई करने की कोशिश करता है, टू मिनिमाइज द स्ट्रेस। सिस्टम इस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा? सिस्टम क्या कर सकता है? सिस्टम, द ओनली थिंग सिस्टम कैन डू, सिस्टम कैन रिएक्ट मोर रिएक्टेंट, इट विल let carbon monoxide and H2O to react. Why is system letting these two substances react more? To evolve more heat, to produce more heat. वाई? बिकॉज क्योंकि हम सिस्टम से खुद हीट एनर्जी को रिमूव कर रहे हैं। सिस्टम उस रिमूव हीट एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए, टू रिएक्ट, सिस्टम विल लेट दिस कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस मोर हीट। वाई इज दैट? टू कंपनसेट, टू compensate the lost heat energy. And this is what system does, and this is right according to Lee Chartier principle. And by doing this, system will move. System is actually moving more in forward direction. System is moving more in forward direction. This is the bottom line. This is something we need to keep in mind whenever system is carrying out an exothermic reaction. And what we are trying to do, we are trying to cooling down the system. Actually we are applying a stress. And what kind of stress? We are cooling down the system. The system and this means that actually we are removing the heat. So in order to compensate the lost heat energy, system will make its reactant to react more in order to produce more heat, to compensate the loss of heat energy. For this, doing this, system will move in forward direction. So what will happen? An exothermic reaction. Number one, stress is cooling down the system. And what will happen? System will move in forward direction. This is it, the bottom line.